Hello, everyone. Am I clearly audible? And the screen shouldn't be visible yet. Let me do that up real quick. Let me just quickly do a check if things are working fine. Let me know if I'm clearly audible and visible too. Let me post it up on Telegram. Just hi everyone. Audible and visible. Great. हाँ जी, सबने टाइटल पढ़ लिया आज. Even I am a little bit frustrated with cheating. हम कैंप वाले हैं. Good. Works, I think. Let me just send it to campus. Audio is not visible. No, screen should be visible, but it should be visible now, not anytime before this. Let me share it off. Yes, someone is saying in the chat. Obviously it shouldn't be visible. Virtual dunga ab. I did yesterday 3D array. Have you created 7D array? The 2-digit DP. ये कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? ये दादा आप गलत चैट पे आ गए हो. दादा आप गलत चैट पे आ गए हो. आपको मैं थोड़ी देर के लिए टाइम आउट पे डाल रहा हूँ. आप गलत चैट पे आ गए हो. आई थिंक चीटिंग के साथ आज वाले क्वेश्चंस पहले हुए में आए हैं, इसलिए ज्यादा सबमिशन हो गए. यस, एग्जैक्टली. सो द थिंग इज the thing is we have a lot of question that are repeated, right? Leetcode Weekly में जैसे जो problem setting होता है ना, उसमें जो problem setters होते हैं, what often happens is they have idea of a problem coming from a coding test, क्योंकि उन्होंने किसी दोस्त को दिया था या किसी का खुद देखा था, and they liked that idea. So often they set coding test questions, and इसीलिए वो ideas बाहर available भी होते हैं, तो people get it done. And even coding test में भी पहले वो चीज like कोडिंग टेस्ट में भी पहले कोई ना कोई इसमें जीपीटी वगैरह में डाल रहता है, तो इट शुड बी देयर इन सम फॉर्म इन प्रीवियस प्लेस समवेयर, कहीं तो है वो अवेलेबल. सो इट्स नॉट लाइक इट्स एब्सोल्युटली न्यू प्रॉब्लम, एंड दैट्स व्हाई इवन आई कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स मच फास्टर कंपैरेटिवली, बिकॉज इट्स known, it's seen somewhere, the idea is seen. But then again, matlab, whether you will be able to solve it on your own in a contest would be like something that would be चैलेंजिंग. मतलब तुम्हें खुद तो करना पड़ेगा ना सॉल्व, तो वो है. तो ठीक है. आई थिंक देर इज लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ इश्यूज विद चीटिंग. मैंने तो वीडियो बना ही दिया है, बट उसमें वही है ना, 3 एंगल है. एक तो यार लाइक एआई को कैसे रोकोगे, एक तो तुम लोगों को कैसे रोकोगे चीटिंग करने से, है ना. एंड इन सब का सोल्यूशन है भी, तो इट्स सो मच ऑफ एफर्ट की एफर्ट लेगा कौन. मतलब टेक्निकली इफ आई सिट फॉर 1 or 2 years ऑन अ प्रोजेक्ट, मतलब एक पूरा प्रॉब्लम पे, probably I can build a system which will have no cheating. मतलब आप cheating नहीं कर पाओगे most probably. But यार 2 साल लेकर के ये system बनाने के का इतना effort, जिसमें there is not much of like huge incentives aligning on things. It's so hard to build like an offline like system that can do this, and it's possible by the way. But वही है कि कौन इस पे इतना खर्चा करेगा, और क्यों colleges इसके ऊपर accept करेगी, क्यों companies इससे hire करना पसंद करेगी, and all these things. वही है problem. तो that is why I feel like even I am also not much inclined towards it, but maybe in some time if we'll see कि ऐसा कुछ अब जरूरत पड़ेगा ही, तो फिर बनाना पड़ेगा कुछ. I mean, cheating can be detected fairly well. बस वही है कि with zero false positive not really, but with very strong proctoring, yes you can, right? There's a cost to everything. There's cost to everything. But if the company bears that cost, or colleges or students, सब कहीं ना कहीं कोई किसी न किसी को तो cost bear करना पड़ेगा to work, to make that business model work. But it is possible. My tower research capital का mock interview और video बनाओ.
था ना यूट्यूब पे पिछले साल का, करते हैं अभी, इसके बाद से स्टार्ट करेंगे विल. सो फॉर दोज हु आर हियर न्यू, मे बी विल स्टार्ट विद सम ओए क्वेश्चन सॉल्विंग एंड ऑल दीज थिंग्स ऑन द स्ट्रीम्स very soon this week. So इस week से I'll start discussing around OAs and stuff. सी हाई विवेक, एक इंटरव्यू में ब्राउज स्टैक के साथ मशीन कोडिंग राउंड है, कोई आइडिया है क्या क्या सकता है? गूगल करो यार, ब्राउज मशीन कोडिंग राउंड में तो यार अच्छे क्वेश्चंस आते हैं. I will take your course but confused about placement support from your course, please apply. Placement support कुछ नहीं है यार, I just help people to get referrals if they are solving all questions, but कोई गारंटी हम लोग नहीं प्रोवाइड करते इस प्रीमियम में. सर लीड कोड पे जीपीटी अलाउड भी नहीं है ना, तब भी लोग कैसे, मतलब अलाउड नहीं है क्या, कॉपी पेस्ट करके कर देंगे और क्या? तुम यहाँ पर जैसे अगर तुम चैट जीपीटी खोलोगे, मतलब मैं ये लाइव दिखाना तो नहीं चाहता हूँ, बट तुम यहाँ से क्वेश्चन कॉपी करके इधर पेस्ट तो कर ही सकते हो, मतलब क्या क्या करेगा जीपीटी उसमें, राइट? कैसे रोक लोगे तुम उस चीज को? सो आई डोंट वांट टू मेक इट लाइक अ ट्यूटोरियल ऑफ चीटिंग, बट लाइक पॉसिबल तो है ही ना, तुम कैसे रोक लोगे किसी को लीड कोड पे करने से? Okay, so yeah, let's then get back, let's talk about this. But वही है, this 3 minutes is obviously GPT, AI के बिना नहीं हो सकता. Yeah, I can make more tutorials, but वही है कि पहले जितना, so last week I was outside, I was like uh, in Coimbatore, but up to I'll back, I'll be taking more videos. This week you'll see more videos than earlier, है ना? कितने क्वेश्चंस बने तुम लोग से? गिव मी लाइक एन ऑनेस्ट ओपिनियन, खुद से बताओ क्या है. सफिक्स ऑटोमेशन, सफिक्स ऑटोमेटा, सफिक्स ट्री, सफिक्स arrays is like a technique, advanced string technique. I think these things you will see in Codeforce's last problems in general, not before that. I think AI can't do dynamic programming questions. Yeah, matlab, it's true. You just have to be smart. 3 2 2 3 2. Okay, nice. I can see a lot of things. Okay, so I think one everybody has solved. So can we skip the first problem? Given a string S, Lytton receives a smallest string that can be obtained by swapping adjacent digits in S with same parity at most once. What is the length? 100. Did how many of you swapped the like smallest, like what is this? Achha, neighboring digits only kya? So generate all the numbers and then sort it and get the smallest possible number, right? Something like this. Okay, I guess I should do NCRT maths of this. Okay, I'll also keep showing Chandraju's code. Maybe like that would be quickly giving you the reference of code implementation if you are looking for the first 1 or 2 problems, because obviously I'll try to in detail discuss the last problems. अरे यार, links requires this. I forgot the login. Anyways, चलो. नहीं, एक ही स्वैप किया. अच्छा, एक ही स्वैप कर दिया क्या? बस जो सबसे पहले जिसमें स्वैप हो पाए उसको स्वैप कर दो. मे बी ऐसा कुछ, right? The first swap that makes it smaller will work. Okay. Yeah, I think that's true. ठीक है, first problem सबसे solve हो गया. Can I move to the next one? I don't want to spend too much on this. Let's move to the next problems. Quick +1 and we'll move to the next one. Today's contest, देखो यार, agenda is today's contest, तो ये तो करेंगे ही. देखो, 2 ही प्रॉब्लम है. डिलीट नोड्स फ्रॉम लिंक लिस्ट प्रेजेंट इन एरे. क्या क्या कहना क्या चाहते हो? 1 2 1 2 1 2 head is 2 2 2 nums. Okay, this numbers from this linked list, is that what we need to do? Okay, too easy. I think this is basically like deleting. You need to know deleting on linked list, and you need to just make sure that whether this number is present in the given number or not. So you can make a hash map of the numbers that are present, and as you go through the linked list, you need to check whether like I'll just quickly tell you the logic. You can quickly maintain like when you are going in the linked list, traversing it,
So when you are over here, you might want to decide that this is a 5, and in the hash map you have to delete 5. So you need to short circuit this to the next one, move it here, and then continue with the process, right? So that is the implementation. So the only thing is you have to maintain the previous wala point. Okay, this is what you need to do. So if you are deleting the current, you need the link from the previous to short circuit the current one. So maintain a previous. That's the only trick in linked list. Baki, if you have practiced linked list, I think this is super easy to do. Okay. मुश्किल से 4 क्वेश्चन किया था. The reason you could do 4 was maybe it was a little easier. That was also true. Fourth problem, maybe it might be easier. I have not seen the fourth problem yet. But this is clear to everyone. Just build a hash map and then just delete the pointers. Does this work? Sir, is it hopeful? Is it somebody's asking Vivek, is it helpful to do CP lead code now? Should I do full-time dev? No. I'll tell you something. There will never be a world where you are only hired based on dev skills. There will never be a world of that sort. Okay, you will be hired. It's just that right now the cheating is happening in so much rampant manner that there will be a system built which will decrease the impact of it. I think speed can be another good proxy where you will see, which you will see coming up. Okay. Uh, no, I'm just saying only dev will not be there. I mean, there are some, but that's a limited world. ठीक है, मतलब फुल वर्ल्ड नहीं हो सकता इस चीज में. देयर विल बी अ वर्ल्ड. मतलब एक तो है ही, स्टार्टअप में तो होता ही है, चलो मैं मान रहा हूँ, वो नहीं मना कर रहा हूँ मैं, बट बोल रहा हूँ कि सारे कंपनीज में कभी सिर्फ डेव के बेसिस पे नहीं होता है. कुछ स्टार्टअप्स में तो होते हैं यार, मेरे को तो पता है कुछ स्टार्टअप्स में होते हैं. ठीक है, तो दोनों में ही रहना है. आई थिंक यू हैव टू डू बोथ ऑफ इट. ठीक है, अब कुछ लोग को देखो यार, तुम लोग अभी तक फंडा तुम्हें समझ में नहीं आया अगर, तो यही है सिंपल फंडा कि दो है तुम्हारे पास, डीएसए डेव हो गया. अगर तुम्हें अभी तक इसी में डीएसए डेव में अटके हो, तुम्हें दोनों पे एवरेज लेवल तो रहना ही है. अब तुम्हारा डेव अगर बहुत स्ट्रांग है तो तुम्हारे लिए स्टार्टअप है, अगर ये बहुत स्ट्रांग है तो तुम्हारे लिए बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है. बस यही है. एक राउंड में सिर्फ सिर्फ एक से तो नहीं होने वाला, कुछ से कुछ नहीं होने वाला, अगर ऐसे सोच रहे हो तुम तो. ठीक है, ये सब जो आज तक सोचता रहेगा कि डेव ही करते रह जाए, कि डीएसए करे, ये करते रहे, वो सोचता ही रह गया आज तक. ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर कि दोनों करो एवरेज लेवल तक, एंड एक बहुत अच्छा करो. दैट्स इट. And either it can be either of it. Okay, next पे मूव करते हैं फटाफट. ये कॉन्टेस्ट खत्म करते हैं, फिर थोड़ी देर बातें करते हैं. आई थिंक लाइक आई विल टेल यू सर्टेन गुड मे बी रिसोर्सेज एंड स्टफ. ये क्या है? वर्टिकल रिप्रेजेंट द कॉस्ट फॉर दिस. ओके. एंड सेकंड वर्जन क्या है इसका? ओके. इतना क्या टेंशन लो, वही है. सर सर 5 स्टार नहीं जा पा रहा गूगल. ओके. हाँ, आज की थोड़ी छोटी होगी इसलिए मैं 5:30 पे स्टार्ट किया हूँ. तो ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किए, फर्स्ट पार्ट कैसे अटेम्प्ट करा तुमने? कि इसमें तो देखो यार, लाइक सिंस दीज कंस्ट्रेंट्स आर स्मॉलर, वी कैन ट्राई एंड थिंक ऑफ व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच यू माइट यूज इन दिस केस. बट सिंस आई थिंक दिस एंड दिस आर वेरी सिमिलर, right? Since this and this are exactly same, right? Just the constraints are higher. Somebody confirm that this and this are exactly same. I'll move to the next one then, like the second one. If I'm not misreading it, is the second one exactly the same except the constraints? Okay, exactly same. In that case, I can move straight to the fourth problem, and maybe we can discuss all different variations which you can possibly think. Okay. Okay. Let's see.
we have to make horizontal and vertical cuts in the graph, and I and j lines pe there is a fixed cost. In one operation, you can choose any piece and not it a 1 cross 1 and perform one of the cuts at horizontal I, horizontal j. Okay, cut the piece is divided into two different parts. The cost initial cost of this entire cake into one at once. So all lines, all of these lines needs to be cut at least once, right? Matlab, every line needs to get touched exactly once, yeah, for sure, right? And I feel horizontal and vertical cuts would be fairly independent in a sense. I mean, okay, हमें इस लाइन पे कट तो करना ही है. Interesting. I solved with partition dp plus greedy. Partition dp plus greedy क्या क्या कर रहे हो भाई तुम लोग ये सब? हाँ, मतलब इतना पार्ट को पार्टीशन करेंगे तो कितना कॉस्ट लगेगा उसको प्लस डीपी. ओके, नहीं डिपेंडेंट तो है, लाइक डिपेंडेंट है कि कौन सा पहले कट करोगे तो दूसरा वाला चेंज हो जाएगा, राइट? Not really, yaar. Somebody saying whoever solves the cheating angle can truly be this. To be fairly honest, I've talked to hiring managers of hiring leads of companies. They don't care. Millionaire, हाँ millionaire बन सकता है, but not truly. Greedy, एकदम नॉर्मल. ग्रीडी तो वही है कि पहले वाला बड़ा कट ले लो. हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि सबसे बड़ा कट ले लो और फिर रिकर्सिवली उसको पार्टीशन करके ब्रेक करना है हमें वापस से. ओके, सोचते थोड़ा सा. मैं तो मेरे को मतलब मैं अभी तक प्रूफ नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब एकदम माइंड में, मतलब ग्रीडी में समझ में आ रहा है कि तुम लोग क्या कर सोच रहे होगे कि 5 है तो 5 को कट कर दो, फिर उसके बाद अब तुम्हें इतने पार्ट में तो लाइक वर्टिकली कट्स करनी ही है, तो देन यू कैन थिंक ऑफ लाइक वन और दिस बीइंग डन, राइट? तो दिस इज व्हाट वी नीड टू थिंक ऑफ. सो 10 मिनट में इसके इतने स्टेप्स थे. हाँ, मेरे को भी इंट्यूशन ही आ रहा है, बट मैं सॉल्व करने की मैं प्रूव करने की सोच रहा हूँ कि लाइक व्हाई वुड दैट वर्क, लाइक व्हाई वुड आई चूज द लार्जेस्ट वन as long as possible sort of thing. सर 40 पॉइंट्स नहीं हो रहे, 4 स्टार एनी टिप्स? पता नहीं यार, ये तो अलग तरीके का क्वेश्चन हो गया. मैंने ऐसा सोचा कि अगर एक और पार्टीशन का कॉस्ट अगर सारे वर्टिकल, सो दिस प्रॉब्लम इज वेरी सिमिलर टू अ चॉकलेट प्रॉब्लम ऑन कोड फोर्सेस. हैव यू सीन दैट? कोड फोर्सेस chocolates dp. I think I've seen it, shown it before. It's a famous problem. I forgot its name. Cutting chocolate से कुछ नाम है. ये बाइंड सर्च वाला नहीं. There is a cutting chocolates करके एक problem. I'll quickly search for it. Code forces educational one. Chocolate bar. हाँ. So this is essentially one very good problem which you can solve. This is a very very good problem. कि तुम्हें अगर कोई भी तुम कट कर रहे हो तो जो कट का लेंथ है उसके जो भी कट कर रहे हो उसके कट का लेंथ का स्क्वायर ऐड होगा. तो दिस इज अ वेरी गुड डीपी प्रॉब्लम दैट यू कैन डू दिस. न्यू मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं यार, आई हैव नॉट यूज्ड ईयरफोन व्हिच नॉइज कैंसल्स, सो you will hear me typing essentially. So this is a very good problem that you can solve after today's session. This is like you have to
you want to eat exactly k square, so you need to break the chocolate bar, and you can break it at any point, but the length of the partition squared is the cost that gets added. This is a very beautiful problem. This is dp problem only. This is very good problem. ठीक है, तो ये solve करना है इसके बाद, and this tells you a little bit of idea around dp on how things might run. Okay, but I'm trying to think of this last problem because it's of 10 to power 5, तो dp तो मैं नहीं सोचूंगा, right? I mean, it's obviously not going to be a dp. 10 to power 5, 10 to power 5 दोनों दे रखे, so it's like some sort of dp, some sort of greedy only. But why is the greedy gonna work is what we need to think about. एक तो intuitively मेरे को समझ में आ रहा है that the costliest one you make as a cut first, and then you try to partition the rest. But then, yeah, everything will have a multiplying factor. Yes, correct. So basically what is happening, right, if you think about it, there are a bunch of horizontal cuts like 1 2 3, and there are some vertical cuts 1 2 3. Okay, so you can make a cut in this line, 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 right? So anytime you split a cut, so ye sare cost now you'll have to spend on this side also and this side also, right? Like as soon as you make a cut at a particular line, you have to now spend all the vertical cuts that will be spent on, like making them kind of break into smaller parts, will be split into 2 times, right? So this is what we basically look at and try to think of, okay, if I have to choose one of the horizontal or vertical cuts, right? If I have to think of one of the horizontal and vertical cuts, which one would I want to choose first? Because if I get this done, right, next, if I take this next one, I will not have to spend this twice, right? Okay. So the thing is, if you take this line, I will have to spend this one on this part and this part, on this part and this part, right? All these things get doubled. So if you take a vertical cut, your horizontal cost that are still left, like costs alive, right? Whatever costs are still alive, they will like get added again, like they will add one more times, right? So this is what is happening. So I will think about, okay, do I want to make a horizontal cut or a vertical cut? In that case, I'll just think about, okay, this is my best vertical cut, because if you do this, still the cost increment will happen the same, but then you will have a bigger cost left. So why to leave that there? So you should always pick the largest in the vertical or the horizontal, whichever one is left. But which one first, if you have to think about it? Yeah, at least one more time, correct. So if I have to think of it, it will just be around thinking of, if I take this, all these, so there is a into 2 multiplier in the vertical one. If I take this, then this will get into 2 in as a multiplier, or I'll get, I have to pay 3 into 2, but the vertical side will now get it into 2 multiplier if I use this cut altogether. 3 into 6 I will use, but my vertical cuts will get 2 into x multiplier, right? So this is something I can try and think around, that what is my current set that are alive, like I will have to do them, and there is a multiplier to it. I'm trying to prove, I'm trying to think of it in terms of proof that I'm very sure that this is there. And for every value over here, I can also think of like what is the cut, which are the cuts left, and what is the multiplier, right, for that. Because once you choose one, you break it all in that column. That is for sure true, that I can like think greedily. इसमें सेगमेंटरी सोच रहा था, ये क्यों सोच रहे थे सेगमेंटरी? अब मेरे को नहीं सोचना सेगमेंटरी कैसे होगा इसमें. ओके. तो वही करना पड़ेगा, फिर सॉर्ट कर देना पड़ेगा दोनों को लेकर के. मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का मल्टीप्लायर भले ही अलग है, बट देन विल ट्राई टू कीप थिंग्स. मतलब if you make a particular cut, the multiplier gets to +1. Like all these cuts will now have to happen one more time, whichever are alive, whichever are not done, and this will get deleted from the set. That is the process, right? Everybody understands this process, that if there is 2 cuts to be made,
1 and 2, here 3 and 4. So if you take 2, all these things get multiplied by 2, and you are still left to be cutting on this line and cutting on this line and cutting on this line. Since there are two parts, so you'll have to make a 2 cut. ये नहीं है क्या? If I'm correct, am I correct or not? Is this what I've read this only? यही है ना क्वेश्चन कि as soon as I pick an element to delete, that gets deleted and the cost will be that into its corresponding sides multiplier. Like अभी 1x चल रहा था इधर, but now since you made a cut on this line, the vertical ones will now need 2x of their cost, right? मैं सिखा तो रहा हूँ भाई, क्या नया टेक्निक, ये ऐसे सोचना सीखो. ट्राई टू लर्न हाउ टू थिंक. दैट्स व्हाट यू शुड एक्चुअली फोकस ऑन. दुनिया भर की टेक्निक से भी कुछ नहीं होने वाला, सोचना भी सीखना पड़ता है. ठीक है, तो मैं ऐसे सोचता कि मल्टीप्लायर है मेरे पास, राइट? मतलब इफ आई हैव टू कन्विंस माई सेल्फ व्हाई इज दिस लॉजिक गोना वर्क, राइट? So this is what I'll try to think, that there is some sort of multiplier for each directions and some elements to be deleted. Now I need to just decide on which order to choose from. Okay, which order in which I should choose the elements from. I mean, I can think of a DP for this in general. Matlab, I can think of it this way, that 3, 4, 5, 1, 2, 3. This is there. So we can think of it like, if I have to think of a perfectly running solution, like which will always work, which is DP of I comma j, that you have sorted, and you will obviously pick the largest one first. So you are over here and over here. Yeah. ऐसे कर लो, उल्टा sort कर लो. Sort the values in the horizontal and vertical thing separately, and you can do a form 3DP. Basically, you will think of each of the directions separately, and you will see, okay, I have deleted 0 here and deleted 0 here. So which one should I choose? You will have two options. One is either you pick this and you move forward, or you pick this and you move forward on this, right? So from here you will have two options: dp of I plus 1 comma j and dp of I comma j plus 1, right? And whenever you choose something, the multiplier for the other direction increases. Does this make sense? Like if I choose this, means over here the multiplier increased. So the value of j is becoming 1, means multiplier for the top part is 2. Basically, if I'm at this place, if I'm taking on the vertical one this one, and on the horizontal one these elements are left. If I choose to take this, on the vertical cut you have made already 2 cuts, so this will be having a multiplier of 3, right? Does this make sense? So we can make a form 3 dp of I comma j, where I is on the vertical, j is on the horizontal, and you can get the answer directly on this. And this is the first observation that I can think of, right? Okay, yeah, multiplier will have the effect on all elements after it, right? True. So this is something that I can see, and this is a DP solution that will work correctly for sure. Everybody clear with the DP solution? Because this is general process covering all options, that I can choose either this and this. And obviously in the column, so you should always pick the largest one, because that will, why to leave it for later multipliers, right? So that is there. So this kind of DP you can try and pick, and then let's see if DP will pass. Let's see the time constraints. This will not pass, but okay, this is a good DP solution. Is the DP solution clear? Quick +1 from everyone. Greedy is just that in a single direction you should pick this largest one first. That to greedy you'll have to assume for sure. Okay, now this much we have arrived, that this DP will work because of this diagram, this multiplier effect. You have to first visualize the process and see this multiplier effect in action. Once you do that, you can think of the DP and you can try to think in how do you manipulate this process. But once this is done, next you think of, okay, maybe this is not fitting in my complexity. How would I think about like making this more optimal, right? So
Now, now this is very similar to, just thinking how to do this. Why will this convert to be picking from vertical cuts is better than sum of cost of vertical minus sum of horizontal, largest from vertical minus largest from horizontal. Picking from vertical cuts is better when sum of cuts of vertical minus sum of cost of horizontal, sum of cost of verticals minus sum of cost of horizontal is greater than equal to largest from vertical minus largest from horizontal. Yeah, so these two elements are what we'll see, right? If you take this, so let's try to think of local decision, like which will be better to take first, right? If you just think of a local decision, like if we try to think of in terms of greedy, that what is better now, we'll do that. If you take this, you will have to pay one more for all this, right? So this is the sum of left in horizontal. But if you take this, you will have to pay one more at least for sum left for vertical, something like this, right? So to take this immediately, you will have to pay a cost of the element plus the sum left horizontal. But if you take this, you will get the cost of this part plus element plus element 2, element 1 plus sum vertical. These are my two options, and maybe I'll try to take the one that is better. Seems like a good strategy. Yeah. So this is more like those statements you write in exchange argument, no? That okay, there are two options for me. Like I have two DP states, DP of either you take this or this. Can I think of it greedily? Like which one works better? If I take this, I'll get like the value here multiplied by the multiplier, but that is anyways fixed. I'll think about it. Let's try to think about it. Let's try to think it formally. Let's try to prove. I think you all also wanted to learn proving, no? So you have already done till this is the ith element. Okay. So you have done I elements before, and this is the jth element over here. Okay. And there are a bunch of other elements left. There is x total sum left and y total sum left here. And this is jth element. Right. So what I'll try to think of is right now the multiplier for this is multiplied by j plus 1 maybe, and for this side the multiplier is multiplied by I. Let's take I and j only. This plus 1 will not change anything. Multiplied by j, let's take this as one indexed, right? These are one indexed only, I and j. So if you decide that you take j first and then I, if you take j first and then I, what will end up happening is you will end up paying the cost of j, which is multiplied by I. So I times ARR of j. I'm trying to write expression and see where it comes. Okay. Plus you pick this one, which is j. Now this has moved one step forward. So j plus 1 into ARR of I, right? And since this has moved one step forward, you essentially will have to pay one more multiplier at least for the rest of the sum on this side too. Into I into j is the multiplier. Like agar if you have already processed I elements on the top side, then this will need this you will need I times, right?
Okay. And if you think about it, this is nothing but the max that is right now available. These are all the previous maxes that you have taken, right? On the horizontal and vertical. So the total leftover elements will be there. So if you pick I, you will have to pick the rest, pick this element with one more multiplier. So if you pick the j, you pick j element at the same multiplier as the I, which is how many elements you have taken on horizontal. Plus, since you have now taken this element will have a different cost, right? This element will have a different cost. This element will have j plus 1, because this has moved one step forward into I, right? But if you take this first is greater than equal to, मतलब मुझे अब मेरे सॉल्यूशन पर डाउट आ रहा है, मुझे भी आ रहा है कि इसका ग्रीडी बन रहा है क्या पक्के से। प्रूफ करने में मुझे भी थोड़ी सी लग रही है कि क्या है इसका, प्रूफ देखना पड़ेगा एक बार। क्योंकि मैं भी वही करता हूँ कभी कभी, प्रूफ बाय एसी, इंट्यूशन पे मार दो सबमिशन, ठीक है, मैं भी वो करता हूँ सॉल्यूशन में काफी बार, बट देन लाइक दैट्स नॉट ऑलवेज द करेक्ट वे, नो, सो आई शुड बी एबल टू प्रूव इट। And then if I take this first, I'll be getting multiplied with ARR of I will be multiplied with j, and you will get for this element I plus 1, right? हाँ, बहुत चल ही जाता है, सही बात है। नहीं, मैं अगर लिखूंगा तो शायद चल ही जाएगा। So if I just take this j to this side, AR of I gets subtracted, so ARR of I should be greater than equal to ARR of j. So अगर ARR of I greater than ARR of j है, तो मुझे किसको पहले लेना चाहिए? मुझे मिनिमम कॉस्ट करना है ना, तो मुझे I को पहले लेना चाहिए। मुझे मिनिमाइज करना है ना कॉस्ट को। हाँ, तो मुझे I को पहले लेना चाहिए। Intuition works on this, not on this, है ना? ठीक है, तो दिस इज द प्रूफ that if you just swap these two things, you will see that which one works better, and accordingly you will find that, you देखो, if you take this, you still have an option to take more here, or you can take this and then go back to this state. So dp of I comma j से, if you think these two things are being taken together, you can always have an option to go to I, मतलब दो स्टेप में you will go to dp of I plus 1 j plus 1. तो किसको पहले लेना चाहिए वो डिसाइड करेगा ये रूल, राइट? और ये रूल बोल रहा है, क्या बोल रहा है? The cost will be lesser if j is smaller. If you take j first, the cost will be lesser, basically, right? So मतलब जिसका वैल्यू ज्यादा है उसको पहले ले लो तो कॉस्ट कम लगेगा मेरे को, दैट्स द थिंग, ओके। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम हॉरिजॉन्टल दो तीन लगातार चूज करें देन वर्टिकल। यस, आई गेट योर पॉइंट, लाइक यू माइट बी सेइंग कि हम बहुत सारे ऐसे वर्टिकल कट्स पहले करें, फिर कुछ हॉरिजॉन्टल कट करें, एंड फिर जाकर के एक सेम पोजीशन पे पहुंचे, राइट? मे बी दोनों का सेम पोजीशन पे पहुंचे, तो उसमें तो फिर आपस में बहुत सारे ऑर्डरिंग में चेंजेस हो गया, राइट? राइट। एक्स एंड वाई तो इज जस्ट द काउंट दैट यू हैव टेकन टिल नाउ। हाँ, तो बात तो सही बोल रहे हो तुम, बट वही है कि एक्सचेंज आर्गुमेंट में जब तुम ऐसे प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो तो दिस इज व्हाट वर्क्स। यार और थोड़ा स्ट्रिक्ट प्रूफ चाहिए, सही बात है, वी नीड स्ट्रिक्टर प्रूफ फॉर दिस, दैट मे बी व्हेन यू स्वैप शुड वर्क। किसी ने बनाया क्या अच्छा प्रूफ इसका? इसका किसी ने अच्छे से प्रूफ दे रखा है क्या? बहुत अच्छा प्रूफ है क्या किसी कोई? एक्सचेंज आर्गुमेंट, ये तो पक्के से वही लिखा हुआ है इसने। ओके, ये तो हमने एक्सचेंज आर्गुमेंट पढ़ते ही है।
तो ये तो जैसे एक स्टैंडर्ड आइडिया है जो मैंने यहाँ पर करा ना, इस टेक्निक को बोलते हैं एक्सचेंज आर्गुमेंट। ये मैंने कैंप में भी पढ़ा रखा है, शायद तुम लोगों ने देखा होगा जो लोग कैंप में भी थे। तो एक्सचेंज आर्गुमेंट में तो ये प्रूविंग टेक्निक बहुत ही कॉमनली यूज होता है कि लाइक दो एलिमेंट को स्वैप करके यू प्रूव द थिंग दैट इट्स नॉट वर्किंग या विच इज बेटर, राइट? सॉर्टिंग कंडीशंस निकालने के लिए दिस इज व्हाट इज टेक्निक दैट इज यूज। तो मैंने भी वही करा है, बट वही कि वो रिगरस प्रूफ नहीं होता एसेंशियली, ठीक है? तो इसीलिए इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग वही एक्सचेंज आर्गुमेंट ही बोल रहे हैं, बट व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू दैट हम इतने दूर का देख नहीं सकते, बट सॉर्टिंग कंडीशंस प्रूव करने के लिए फिर हमें मैथमेटिकली और अच्छा कुछ स्टेटमेंट ड्राइव करना पड़ेगा। हाँ, ग्रेडियंट कंसिडर का फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने करा था, राइट? लाइक एक्सचेंज आर्गुमेंट के ऊपर क्वेश्चंस उसी टाइप का है। इसमें भी वही था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पहले करना चाहिए, तो देयर हैज टू बी अ सॉर्टिंग कंडीशन फॉर इट मे बी। सो आई विल ट्राई टू राइट दिस, आई विल सी दैट जो बड़ा है उसको पहले लेना बेटर आ रहा है दोनों में से भी, तो आई विल डू दैट। एंड वंस यू गेट दैट स्ट्रेटजी, उसके बाद तो इसको सिमुलेट करना कोई बहुत हार्ड चीज नहीं है, राइट? वंस यू नो दैट देयर इज अ हॉरिजॉन्टल एंड अ वर्टिकल थिंग, simulating this is not hard, that if you take this then you'll have to pay a cost on this side, if you pick this then you'll have to pay a cost on this side on for all the elements and stuff. So that though you will be able to do it very very fast. So technically it becomes that you have two different like sets, h and this, and you maintain two pointers for it and you move forward in that, and जो भी छोटा उसको पहले लेना है, right? तो if I think about it, क्या लिखा है इतना सारा कोड? हाँ, कितने सारे एच लिए, कितने सारे वी लिए, एंड व्हेनेवर यू से दैट हॉरिजॉन्टल कट का वैल्यू अगर बड़ा है तो मैं हॉरिजॉन्टल कट लूंगा एंड आई विल मल्टीप्लाई इट विद वी काउंट, एंड एक हॉरिजॉन्टल ले लिया तो हॉरिजॉन्टल काउंट प्लस प्लस हो गया। दिस इज एग्जैक्टली द सेम लॉजिक, एंड व्हाटएवर इज लेफ्ट एट द एंड ही हैज लाइक लूप्ड दैट सेपरेटली, ठीक है? क्या भाई 3-2? तो आइडिया तो यही है, इसमें जनरली वही रहता है कि यू हैव टू थिंक अबाउट एक्सचेंज आर्गुमेंट एज अ प्रूफ। कितने लोगों ने एक्सचेंज आर्गुमेंट पढ़ा है प्रॉपर्ली? क्विक +1 पढ़ा तो था चंद्रचूड़ एक्सचेंज आर्गुमेंट, बट वो ये कि एकदम रिगरसली प्रूफ कर पाना मुश्किल हो रहा है। I used a very small laptop for my first year, then bought a Mac in my second year. तो MacBook is better, I feel, if you are doing it for coding. But games खेलना है तो Windows ही खरीदना है यार। Exchange argument पढ़ाने में टाइम लगेगा, but exchange argument is a really good topic. I think if you haven't heard about exchange argument, I think you will get a blog by Eric To. Eric To has made videos on exchange argument, and there are even like good ideas around it. भैया एक बार एक्सचेंज आर्गुमेंट क्या होता है? एक्सचेंज आर्गुमेंट क्या होता है? एक्सचेंज आर्गुमेंट बोलता है कि यार प्रूफ कैसे करते हैं, कि यार एक्सचेंज आर्गुमेंट में जल्दी से बता देता हूँ क्या है। एक्सचेंज आर्गुमेंट क्या होता है? सपोज तुम्हें बोला गया कि तुम A B C ऐसे A1 A2 A3 अगर आ रहे हैं और B1 B2 B3 आ रहे हैं, तुम्हें इसका जो प्रोडक्ट है उसको मिनिमाइज करना है, लाइक डॉट वाइज। तुम ये 3 डायमेंशनल वेक्टर्स है, ठीक है? 3 डायमेंशनल वेक्टर है, तुम्हें इसका डॉट वाइज प्रोडक्ट मिनिमाइज करना है, डॉट प्रोडक्ट मिनिमाइज करना है, राइट? सो व्हाट यू डू इज यू ट्राई टू से कि तुम इसको रीअरेंज कर सकते हो एलिमेंट्स को, बट ए का अरेंज को आपस में रीअरेंज कर सकते हो, बी को आपस में रीअरेंज कर सकते हो, तुम्हें इसका डॉट प्रोडक्ट को मिनिमाइज करना है। सो यू नीड टू फाइंड अ कंडीशन बाय व्हिच यू शुड ट्राई एंड अरेंज देम। तो एक हो सकता है तुम इधर 1 2 3 1 2 3 रखो, या फिर 1 2 3 3 2 1 करो। यू विल सी दैट डॉट प्रोडक्ट इन दिस इज कमिंग मिनिमम, राइट? उल्टा रिवर्स सॉर्ट करके अगर रखोगे तो the values will get multiplied with the smallest possible values and that will be there. So इसको प्रूफ करने का तरीका क्या होता है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सचेंज आर्गुमेंट, कि यार हम बोलेंगे कि हम A1 A2 अगर 3 डायमेंशन नहीं होगा, n डायमेंशन भी होता है ये चीज, 3 अप टिल AN, ठीक है? इसमें बीच में कहीं आ रहा है AI आ रहा है, एक AJ आ रहा है, और हम बोल रहे हैं B1 B2 B3 BI BJ ऐसे अप टिल BN, ठीक है? हमने सपोज इसको सॉर्ट कर रखा है और इसको हम क्या कर रहे हैं, 2 एलिमेंट को देख रहे हैं, बस फोकस कर रहे हैं कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, हमें 20 को क्या करना चाहिए। अगर हमारा A सॉर्टेड है तो हमें 20 को क्या करना चाहिए? तो हम एज्यूम करेंगे कि A सॉर्टेड है और सिर्फ इस डॉट प्रोडक्ट में इसको स्वैप करके देखेंगे, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज करके देखेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि पहले अगर अगर अभी जो है वो बेटर है, तो अभी मेरा डॉट प्रोडक्ट क्या है? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस डॉट डॉट AI BI प्लस AJ BJ प्लस डॉट 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 AN BN, ये बेटर है। बट अगर मैंने स्वैप करा तो वो वैल्यू खराब हो जाना चाहिए, मतलब इट शुड बिकम बिगर बिकॉज आई हैव टू मिनिमाइज द डॉट प्रोडक्ट।
तो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू, अगर मैंने स्वैप करा तो जो कंडीशन आएगा A1 B1, क्योंकि देखो बाकी सब में डॉट प्रोडक्ट तो चेंज नहीं हो रहा है, A2 B2 अप टिल AI BJ प्लस AJ BI प्लस डॉट 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 अप टू AN BN, ठीक है। अगर अभी जो मेरा कंडीशन है, अभी मेरा जो ये ऑर्डर है ए और बी का, ए एंड बी का जो ऑर्डर है वो बेटर है, तो अभी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो छोटा होना चाहिए कंपेयर टू एनी अदर स्वैप दैट यू कैन पॉसिबली डू। तो इससे हमें क्या मिलेगा, कि इससे हमें मिलेगा कि अगर हम देखेंगे कि इधर तो इस एक्सप्रेशन में A1 B1 A2 B2 ये सब कॉमन है, इसको डिलीट कर देंगे, बस चेंज कहाँ होगा, ये चार टर्म चेंज होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं AI BI प्लस AJ BJ इज लेस देन इक्वल टू AI BJ प्लस AJ BI, ठीक है। और इससे हम डिराइव कर सकते हैं कि इसको इस साइड पे लेके आओ, इसको इस साइड पे लेके आओ, AI BI माइनस AI BJ माइनस AJ BI माइनस AJ BJ is less than equal to 0. From this we can say that AI कॉमन ले लो, AI BI माइनस BJ माइनस AJ कॉमन ले लो, BI माइनस BJ, फिर AI माइनस AJ इंटू BI माइनस BJ इज लेस देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन आ जाएगा, यस और नो? ये कंडीशन आएगा अगर एक को स्वैप करा और अज्यूम करा कि पहले बेटर था, तो स्वैप करके वैल्यू बढ़ना चाहिए डॉट प्रोडक्ट का, तो उस कंडीशन को बस मैंने मैनिपुलेट करके मैं ये कंडीशन ला सकता हूं। ट्रू? क्लियर अप टिल दिस पॉइंट? क्विक प्लस वन इन द चैट। हमने अज्यूम करा कि दो वैल्यूज को सिर्फ स्वैप करा बी में, तो उससे हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है वो इंक्रीज कर गया बेसिकली, तो वही इंक्रीज को लिख के मैंने बस ये एक्सप्रेशन डिराइव करा है। एंड इसको लिखने के बाद हम क्या देखेंगे, क्योंकि ए सॉर्टेड था, बिकॉज ए वाज सॉर्टेड, वी कैन से दैट दिस इज लाइक AI माइनस AJ इज नेगेटिव, नेगेटिव इनटू समथिंग इज नेगेटिव, तो ये वैल्यू क्या होना पड़ेगा? सॉरी दिस इज प्लस, दिस इज प्लस नो। तो अगर ये नेगेटिव इंटू समथिंग इज नेगेटिव, तो ये वैल्यू क्या होना पड़ेगा बताओ? सो कैन आई से BI माइनस BJ हैज टू बी पॉजिटिव? कैन आई से BI इज ग्रेटर देन इक्वल टू BJ, विच टेल्स अस कि BI को BJ से बिगर होना पड़ेगा। अगर स्वैप करने से खराब हो रहा है, इसका मतलब BI is greater than equal to BJ. So between any two pair, you can say that this was the most optimal ordering. So you should have sorted it in a decreasing order. So that is why अगर ये increasing order में, तो इसे decreasing order में sort करना is the best thing to do. That is how you can prove it कि descending order में, because any two swaps makes it worse. So and you can reach any configuration by swapping and stuff. So you can say that it's a sorting condition that you can use. This is called exchange argument as a technique. ठीक है, स्वैपिंग प्रूफ बोल सकते हो इसको। समझ में आ गया? तो दिस इज व्हाट इज यूज्ड टू इवन प्रूव द क्वेश्चन दैट वी टुक टुडे। ये वाला प्रॉब्लम, इस पे भी मैंने वही लगा के ये निकाला कि जो बड़ा है उसको पहले लेना चाहिए, तो उससे फिर वी कैन से दैट। But sometimes this exchange argument also doesn't tell you whether you are at a local minima or maxima. But again, in general, अगर condition है तो वो यही होता है. That's the thing. तो conviction पे एक बार greedy मानना पड़ता है कभी-कभी. Isn't that implied that if A is sorted like individual product are decreasing, increasing based on sorting area? Yes, that is true. You should do that. मतलब मैं example दे रहा था that how do you prove using swapping proofs? समझ में आया swapping proof कैसे करता है काम? Clear everyone? यार एक और चीज, आई थिंक सारे क्वेश्चन तो हो ही गए फिर, मतलब कोड भी मैंने दिखाई दिया, यही है कोड और कुछ नहीं है। तो इसने प्रूफ ठीक ठाक लिखा है, बट वो ये स्वैपिंग प्रूफ इट वुड बी अ बेटर आइडिया टू थिंक अबाउट, एंड दिस इज जस्ट रिवर्स सॉर्ट करके लाइक स्टार्ट फ्रॉम दिस काउंट इज 1 1, तो ये तुम्हारा कॉस्ट पड़ रहा है और कुछ नहीं। देखो यार, आई वांट टू जस्ट एड्रेस दिस वन थिंग। पहले सारे क्वेश्चन समझ में आ गए? अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यार, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े तो लोग ऐसे थोड़ा कुछ ज्यादा ही डिमोटिवेटेड हो रखे हैं।
बट यार आई टेल यू वन थिंग राइट, मतलब तुम लोग लीड कोड इवेंचुअली किस लिए दे रहे हो? क्या रेटिंग बनाने के लिए? एंड आई मेक सेंस कि रेटिंग अच्छी चीज है, बट मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, लाइफ में मोस्ट मोस्ट नंबर्स एंड अचीवमेंट्स फेड अगेंस्ट टाइम। कभी लगता था कि बोर्ड्स में एग्जाम के मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है ना? कभी लगता था कि लाइक 12th में मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा? फिर लगता था सीजीपीए खराब, तो सीजीपीए तो लोगों को नहीं लगता है वैसे, क्योंकि कोई बोलता ही नहीं है, बट होती नहीं कैसी कि यार ये खराब हुआ तो क्या करे, ठीक है? तो वैसे ही रहती है, रेटिंग भी एक चीज है, बस इट्स अ नंबर व्हिच विल फेड अगेंस्ट टाइम। मतलब मैं अब नहीं सोचता कि मैं कितना रेटेड कोडर हूँ, आई डोंट, मतलब इट हैज बीन 3। मैं कॉलेज में बहुत सोचता था यार, आई यूज्ड टू थिंक अबाउट रेटिंग एंड आई यूज्ड टू फियर गिविंग कॉन्टेस्ट। कभी कभी तो बंद कर देता था कॉन्टेस्ट कि यार मुझे पता है कि आज शायद कम जाएगा, मैं रेटिंग में नहीं दूंगा कॉन्टेस्ट आज का, ठीक है? मैं ऐसे भी सोचता था कभी कभी, एंड इट्स वेरी ट्रू। बट लाइक मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स विल पेरिश इन द टेस्ट ऑफ टाइम। सो वही है, क्या तुम्हारे पास सच में वो स्किल है? मतलब द मोमेंट यू रियलाइज, मतलब मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे लाइक मेडल्स, अचीवमेंट्स, इन चीज़ों के पीछे भागा है, ठीक है? आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, I've spent a lot of time. But what I've understood is that only thing that stays with you is proper skill. मतलब जो तुम, I can sit any day and give these contest and मेरे से क्वेश्चन बन जाएगा, and it makes me feel happy कि यार ठीक है यार, मेरे पास एक ऐसा स्किल है जिसके लिए मैं किसी में भी बैठ के कॉन्टेस्ट सॉल्व कर दूं एंड स्टफ, ठीक है? मैं कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, मैं मेरे को अगर कोई कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम देगा तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा। आई कैन इंटेलेक्ट, मतलब I would love solving an intellectually challenging problem, ठीक है? And that is, isn't that what is even required in most places? कोडिंग तुम्हें लगता है कि जॉब में, आई अंडरस्टैंड दैट जॉब के लिए डिफिकल्टी हो रही होगी चीटिंग वगैरह की वजह से, बट तुम्हें क्या लगता है कि जॉब में जाने के बाद तुम्हें क्या लाइक ऐसे करके रोज डेटा एंट्री वाला जॉब करना है क्या? अगर डेटा एंट्री वाला जॉब करना है तो फिर रट के तो हो सकता है, कुछ पता नहीं क्या होगा, बट हो सकता है। बट देन इन जनरल व्हाट आई फील इज you do not want to get into a zone where you are linking yourself too much to the numbers that you are getting। वो अभी भी तुम लोग शायद थोड़े जूनियर हो, मैं अभी कॉलेज में रियलाइज नहीं कर पाया था ये चीज, एंड आई थिंक तुम भी अभी ये बोलने के बाद भी नहीं कर पाओगे, आई एम फेयरली ऑनेस्ट। बट ओवर टाइम यू रियलाइज दिस, तुम लोग से मैं थोड़ा 3-4 साल बड़ा हो गया हूँ अब, तो आई कैन टेल यू दिस कि ओवर टाइम यू रियलाइज दिस पार्ट। प्लस देर इज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लाइक चीटिंग दैट हैपन्स। तो चीटिंग तुम्हें पता ही है अगर हो रहा है तो तुम चीटिंग से कंपटीशन ही क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो बस अपने आप से कंपटीशन करना है कि यार मेरे से क्वेश्चन क्यों नहीं बना, मेरे को क्या टेक्निक नहीं आता था। वंस यू ट्रांसफॉर्म इनटू दैट मेंटालिटी ना, इट बिकम्स रियली गुड, बिकॉज बहुत बार मैंने, मतलब मैं अपने टाइम पे जब सस्टेन करता था ना, मैं कंपटीशन सोचता था, बट मैं उससे सोचता था कि मेरे से क्वेश्चन क्यों नहीं बना, क्या टेक्निक इसमें अच्छा टेक्निक है, ये चीज है। व्हेन यू बिकम क्यूरियस अबाउट दैट एंड देन यू स्टे विद द फील्ड, तो आप सही मोटिवेशन की वजह से उसके साथ स्टिक रहते हो। तो देखना अभी भी क्या है ना कि अब जैसे दो चीज होगा, एक खराब तो होगा ही कि कुछ बिगिनर्स अच्छे लोग पहुंच नहीं पाएंगे कभी अच्छी जगह पे, क्योंकि वो लोग पहले डिमोटिवेट हो जाएंगे। बट देन देर आर सर्टेन पीपल हु स्टे विथ सीपी या डीएसए फॉर राइट रीजंस कि यार मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करने में अच्छा लग रहा है, मेरे को लाइक ये क्वेश्चन कितना अच्छा इंटरेस्टिंग था, ये स्वैपिंग प्रूफ काफी अच्छा सीखने को मिला, आज नेक्स्ट दिन इसको जाके पढ़ूंगा अच्छे से, क्या करना है, इसके और क्वेश्चंस देखूंगा, ढूंढूंगा। सो व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी इन यू ना, तो दैट जस्ट ट्रांसलेट्स इनटू रियली गुड रिजल्ट, ठीक है? एंड एक चीज में ये जो मेंटालिटी होता है ना, ये एक चीज में होने से नहीं होता, ये तुम जॉब पे भी जाओगे तो भी लोग ऐसे ही, मतलब कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि बस वो किसी तरह कॉपी करके काम मिल जाए, हो जाएगा काम, बस खत्म, काम खत्म। कुछ लोग कहते हैं यार कि यार कितना अच्छा आज मैंने ये अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करा, आई लव, मतलब अगर मुझे कोई अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिला तो मेरे को अच्छा लगता है। इन जनरल दैट इज हाउ इट वर्क्स, इवन इन जॉब, इवन इन एनी प्लेस, ठीक है? अगर मैं कोई अच्छा चीज क्रैक करता हूँ तो दिस, हाँ। बट रेटिंग, वही बात है ना कि जो रेटिंग का सिस्टम था ना, वो डिजाइन नहीं किया गया था थिंकिंग अबाउट चीटिंग, ठीक है? कि देखो, जब आप कोई सिस्टम डिजाइन करते हो ना, उसमें आप गेमिफिकेशन एलिमेंट डालते हो, रेटिंग्स, स्ट्रीक्स, दीज आर ऑल गेमिफिकेशन एलिमेंट्स, ठीक है? नाउ ऑल दीज थिंग्स पुश यू टू ग्रो। बट अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मोस्ट पीपल हैव बीन सीइंग रेटिंग एज द लाइक मोटिवेशन, मतलब जो गेमिफिकेशन एलिमेंट व्हिच हैज बीन वर्किंग फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। एंड अब क्या हो रहा है, वो उनके अगेंस्ट काम कर रहा है कि यार वो तो उल्टा रिवर्स पुश कर रहा है मुझे एसेंशियली, ठीक है? तो उसका जो पर्पस था, लर्निंग का पर्पस, वो पूरा डिफीट हो गया है, ठीक है? मतलब लाइक आई थिंक इफ लीड कोड जस्ट ड्रॉप्स रेटिंग सडनली, इट विल बी ऑल हेल्दी। तुम ध्यान से सोचो, अगर आज के टाइम पे मैं लीड कोड का रेटिंग हटा दूं और रैंकिंग चलो लीडर बोर्ड में तुम्हारे लिए हिडन कर दूं, क्या तुम्हें कॉन्टेस्ट देने में अच्छा नहीं लगेगा?
जस्ट बिकॉज उस प्लेटफॉर्म पे वो शो किया जा रहा है, द गेमिफिकेशन जो रिवार्ड्स ही है वो ऐसे सेट की गई है कि जिसको चीटिंग से लोग बीट कर पा रहे हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है ये। रैंकिंग्स शो होना चाहिए, बट मैं बोल रहा हूँ कि वही है कि चीटर्स को मैं अगर हटा दूं लीडर बोर्ड से, या तो मेरे रैंक दे दो, है ना, तो वही हो जाएगी। अगर मैं रेटिंग हटा दूं तो इंस्टेंट चीटिंग कम जाएगा, क्योंकि कोई मोटिवेशन ही नहीं बचा ना चीटिंग करने का। तो वही बात है कि दीज आर द प्रॉब्लम्स। नाउ अब चीटिंग को कैसे डिफीट करें, इसका बहुत बड़ा, मतलब मैंने तो बहुत सोचा है बैठ के, मतलब आई मतलब आई कैन लेजिट प्ले अ बिजनेस प्लान एट दिस पॉइंट इन टाइम कि चीटिंग को कैसे डिफीट कर सकते हैं। बट देन द थिंग इज कि यार इतना ज्यादा एफर्ट लेकर के कुछ होगा भी कि नहीं पता नहीं, एंड देयर इज लाइक सो मच ऑफ मल्टी इट्स अ मल्टीप्लेयर सिस्टम, राइट? कंपनीज है, कॉलेजेस है, स्टूडेंट्स है, तो वेरी फ्यू पीपल कैन डू इट। नथिंग यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर श्योर, ठीक है? कॉलेज भी कुछ नहीं कर सकती अकेला, वो भी कोई नहीं कर सकता, देयर हैज टू बी सेंट्रल बॉडी मोस्ट प्रोबब्ली, ठीक है? I hope nobody recruits from Leetcode so the cheaters don't come here anymore. Yeah, that is the ideal world, but ऐसा होगा नहीं. It like any shift takes time. There was a time जब लोग code forces rating नहीं देखते थे. मेरे time पे जब I was in my first year, for recruiting people used to not see code forces rating. But eventually they saw for 2-3 years कि जो लोग अच्छी जगह पे पहुंच रहे हैं उनका code forces rating actually अच्छा है. So there is some correlation. So people started understanding in their data कि यार जिनका रेटिंग अच्छा है वो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंटरव्यूज में फॉर सम रीजन. सो देन पीपल स्टार्टेड सीइंग सीपी रेटिंग्स, एंड देन वो रिवर्स प्ले कर गया कि यार ओ शिट, इसको तो चीट कर सकते हैं इस सिस्टम को, ठीक है? देयर वाज अ कोरिलेशन कि रेटिंग अच्छा था तो वो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे थे इंटरव्यू में, सो पीपल स्टार्टेड शॉर्टलिस्टिंग एंड हेल्पिंग सेविंग देयर इंजीनियरिंग बैंडविड्थ कि यार इंटरव्यूज कम लेने पड़े कंपनीज को. बट देन प्रॉब्लम ये हो गया कि अब उस चीज को तो गेम किया जा सकता है ना? तो दैट इज द ओनली इशू. दिस सिस्टम मतलब सिस्टमैटिक फेलियर है एसेंशियली ये ऑल टुगेदर, एंड इट वर्क्स इन फेजेस. तो अब इमीडिएटली तो कुछ का कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है? Think of it like another COVID that has come. But anyways, this is what is happening, and there are solutions. Yeah, there is. I think eventually, like there should be a system like JE for tech recruitment altogether, pan India. ठीक है, जैसे TCS आयन होता है ना, ऑलमोस्ट उस टाइप का एक पैन इंडिया टेस्ट होना चाहिए essentially with periodicity. मतलब 2 months, 4 months periodically you can update your score there. The company gets the full data around that, and that is there. व्हाट इज द राइट मेंटालिटी यार? राइट मेंटालिटी यार कि मैं सच में क्या मैं अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा हूँ, मेरे को ये टेक्निक क्यों नहीं आता, मैंने इस प्रॉब्लम में क्या सीखा, ये प्रॉब्लम के पास कुछ तो अच्छा टेक्निक है जो मेरे को नहीं पता, क्या मैं वो सीख लूँ, है ना? तो दैट इज व्हाट आई विल से इज द राइट मेंटालिटी. इफ यू कैन सस्टेन विद दैट, दैट्स गुड. नहीं तो फिर आई फील इवन आफ्टर गेटिंग इनटू टेक यू विल नॉट ग्रो वेरी वेरी फार, वेरी वेरी फार. ओके. Is it possible to get into FANG through cheating? I think I know yes. I know some people have reached. So I'll not say no to that answer. I'll be honest. It's possible to reach at this current point in time to reach a company like FANG cheating. But everybody cannot do it. It's very hard. But आगे नहीं जाओगे कहीं, ठीक है? These people live in imposter syndrome for their life. In fact, if you haven't cheated, you should be more confident about yourself. I know cases where people have gotten into companies. But ठीक है, मतलब what suits people suits them, है ना? How to prepare for alphabet in 1.5 months? नहीं कर सकते इतना जल्दी तो. uh, भैया प्लीज कन्वे माई मैसेज टू एल्गोरिथम टीम, टाइम कम और मुझे कोर्स लेना है. ओके, आई टेल देम. सपोर्ट पे मेल करो यार, आई टास्क द टीम वाइज टेकिंग सो मच टाइम. ठीक है, आई एम स्टार्टिंग डीएसए नाउ. गोलैंग, एनी टिप्स यू वुड रेकमेंड? डीएसए गोलैंग यार कोई टिप्स तो नहीं है यार, मतलब कीप आस्किंग जीपीटी ऑन कॉरस्पॉन्डिंग थिंग्स दैट यू सी ऑन नेट. आई थिंक दैट विल बी वन. भैया आपका गूगल में जनरली स्टाम क्या रहता है स्टैक? आई थिंक आई हैव मूव्ड आउट ऑफ गूगल एट दिस पॉइंट इन टाइम, बट देयर इज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आई यूज्ड टू वर्क ऑन क्लाउड सर्च. जीमेल के ऊपर तुमने सर्च बार देखा है? जीमेल के ऊपर सर्च बार था, उसके रिजल्ट्स में जो रहता है वो सब मेरी टीम कंट्रोल करती थी. क्लाउड सर्च बोल लो उसको. विवेक गुप्ता, क्लाउड
न्यू कोहोर्ट कब लाओगे यार? हम लोग का हर 2 मंथ में एक कोहोर्ट स्टार्ट होता है इजेड प्रीमियम में, सो दैट इज देयर। प्लस और चीजें चलती रहती है, बट वी मोस्टली वर्क ऑन अदर थिंग्स, नो, लाइक इजेड तो इज नॉट, लाइक इजेड प्रीमियम इज जस्ट 20% ऑफ ऑल ऑफ इट, ऑफ algozenith essentially, I feel. So it's not just that. What do you think was the ratings of for today LC4? No, this isn't very hard, but this is like diff to D problem, diff to C D problem. CF का ad hoc flavor हल्का सा add हुआ है इस problem में. If Fang can't detect cheating, who can? No, Fang can, but the proctoring is not efficient enough. कोई एक लैब में अपना मोबाइल पॉकेट से निकाल के फोटो ले क्यों पा रहा है? दैट्स द ओनली थिंग. व्हाई इज द रेशियो शो बैड? इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि द रेशियो इज शो बैड कि तुम 8 लोग को एक जन नहीं दे सकते देखने के लिए कि वो चीटिंग कर रहा है नहीं कर रहा है. दैट्स द ओनली प्रॉब्लम. अगर मैं एक लैब में 8 लोग को मेरे सामने बैठा दूं अलग अलग दूर दूर करके और कोई कुछ चीटिंग नहीं कर पाएगा, वो कैसे कर लेगा चीटिंग? मैं नहीं कर पाएगा. ठीक है. आई सीन एनफ प्रॉक्टरिंग सेटअप्स दैट कैन प्रिवेंट चीटिंग इन लैब्स. ठीक है. अगर मुझे बस एक सीसीटीवी कैमरा तुम दे दो और लाइक लैपटॉप में कंप्यूटर चेंज कर सकता हूँ, मेरे पास कंप्यूटर का एक्सेस है, मुझे 1 घंटा पहले टाइम दे दो, नोबडी कैन चीट ऑन दैट कंप्यूटर एट ऑल. ठीक है. तो चाहे तुम जो मोबाइल लेके आ जाओ, जो कर लो. ठीक है. There are simple 2-3 techs that exist which can prevent doing cheating anywhere. But the thing is it's so infra costly कि कोई कंपनी इतना पैसा पे करेगा ही नहीं. स्टूडेंट्स को पैसा पे करना पड़ेगा, कॉलेज को बियर करना पड़ेगा, बहुत चीजें रहेंगी. तो देयर इज अ मल्टीप्लेयर सिस्टम दैट कैन बी बिल्ट व्हिच कैन प्रिवेंट चीटिंग ऑल टुगेदर. करेगा कौन ये सब यार? आइडियली हैकरों को करना चाहिए. आई एम हैप्पी टू सजेस्ट, बट कुछ कोई फायदा नहीं है करके ये सब चीजें, मेरे को ऐसा लगता है. बिकॉज believe me when I say this, I've talked to some hiring managers also. I'm happy to talk to companies manager, like hiring managers, if like जो लोग सोच रहे हैं कि उनको cheating proof free hiring करना है, I'm happy to help them with certain things. But from what I've seen, most are not interested. उनको पता फर्क नहीं पड़ता भाई. जूनियर इंजीनियर में कोई भी आ जाए, वो बाद में ऐसे भी निकाल देंगे, जो नहीं काम कर रहे पिप डाल के निकाल देंगे उनको, और बाद में फिर ट्रांसफर करके दूसरे कंपनी से फिर और लोगों को लाएंगे सीनियर इंजीनियर पोजीशन पे काम करेंगे वो लोग. वैसे भी मोस्ट ऑफ कंपनीज में कॉप्स वाले काम बचे हुए हैं, सो डजंट रियली मैटर इफ यू हैव गुड इंटेलेक्ट और नॉट. सो दैट्स व्हाई पीपल डोंट केयर अबाउट वेरी हाई इंटेलेक्ट दीस डेज. इंटरव्यू बूट कैंप अगर अच्छे से नहीं दे पाता तो होगा और भौकला गया बीच में. भैया एक इसरो का हैकाथॉन टॉपिक आई रिलेटेड, बट ये सब फालतू क्वेश्चन मत पूछो मुझे. क्या तुम सब आइडिया भी लेके मेरे से जाओगे क्या तुम लोग? भैया क्वेश्चन नहीं बनने से कहाँ से सॉल्यूशन देखना अच्छा रहता है? नेट पे जहाँ भी मिल जाए. स्टाइवर इज, हाँ भाई कंपेयर कर सकते हो तुम, बट कंपेयर का कोई फायदा नहीं है. तुम तो नहीं हो फॉर श्योर. कंपेयर करके कोई फायदा नहीं होता है भाई. खुद बन जाओ तो बेटर रहेगा. विवेक, हाउ टू गेट इनटू टॉप 1% लाइक यू? आई थिंक pure love for the field. I think I have grown this much because I used to love solving problem. There is no other way to get into the top 0.1%, 0.1%, I would say. There's no other way to get there. That you have to have pure love for the field. There's no other way to get into that. Because you will never be curious enough, right? Yeah, tech can solve corruption, but the thing is, does money works that way? That's the only problem. क्या economics उसका work करेगा? Again, that's the problem. गूगल डीओसी में पढ़ के फैंग इंटरव्यू में करते हैं. आई हैव सीन भैया एनी गुड रिसोर्स ऑन ग्राफ एंड ट्रीज. ग्राफ एंड ट्रीज सीएस का ग्राफ क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व. दैट्स गुड प्लेस. I know DSA, you can help me where to learn started. If you want to start learning DSA, I think first start building a good implementation skill. This is what I went to a college as like we partner with colleges too, like to help them build really good culture and placements. ठीक है. तो what I generally feel is most people struggle with implementation. Implementation अच्छा नहीं इसलिए DSA नहीं हो रहा है. तुम लॉजिक बनाना सीख रहे हो, लॉजिक के बनाने के बाद तुम कोड कर नहीं पा रहे हो उसको, तो फेल ही हो गए. तो फर्स्ट गेट योर इम्प्लीमेंटेशन रियली राइट. ओके, तो वो पहले सबसे पहले सॉर्ट करो. सॉल्व बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ C++. बेसिक नहीं मतलब कोडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिसमें तुम्हें कोड करना पड़े. आधी तो इंडिया तो कॉपी में कोड लिख रही है, कहाँ से तुम कोडिंग करोगे? ठीक है. एजेड को बना दो. वो तो हाँ वो बना सकते हैं हम लोग. लाइक आई कैन लाइक इफ सम कॉलेज वांट्स आई कैन बिल्ड देम दैट सॉल्यूशन. बट वही है कि उसका इकोनॉमिक्स वर्क करना चाहिए ना यार. उसमें इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा है. उसमें मैन थोड़ा प्रॉक्टरिंग सेटअप पे काम करना पड़ेगा.
टेस्ट वेस्ट प्लेटफॉर्म पे काम करके नहीं होगा भाई, प्रॉक्टरिंग सेटअप पे काम करना पड़ेगा कॉलेज में, एंड हाउ टू मेक दैट मनी वर्क प्रॉपर्ली। आई थिंक दैट इज द ओनली सोल्यूशन। टेक से क्वेश्चन अच्छा बना के क्वेश्चन चेंज करके तुम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। कैन यू बिल्ड गुड प्रॉक्टरिंग? दैट्स द ओनली थिंग। एंड वो पॉसिबल है इफ यू स्पेंड मनी, इफ कंपनीज वांट टू डू दैट, बट कंपनीज डोंट वांट। At Coder Aryans. Yes. At Coder Code Process, you can go to Aryan's channel. Aryan also kind of creates really good content around those, so you can watch that. भैया एनी गुड रिसोर्स ऑन ग्राफिटी? बता दिया मैंने CSS का। एट कोडर एक्सप्लेनेशन भी बनाओ भैया। व्हाट इज द हायरिंग प्रोसीजर इन एल्गोरिथम? यार मोस्टली स्टूडेंट्स ही ज्वाइन कर जाते हैं, but there was this one hiring form that was open. If you want to apply to Algocentric, I'll send you the hiring form. It's still not closed yet, so you can apply. So I think there are 4 positions that are open at this point in time. मतलब full time नहीं है, मतलब first intern ही लेते हैं हम, and then उसके बाद people get convert to full time if they do really well. But if you want to apply, I'm happy to like take, like there will be proper process that happens. या आज बहुत चीटिंग हुई। हाँ हाँ ठीक है, हमेशा ही हो रही है। अरे तुम क्वेश्चन करना तो 4 क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा तुम्हारा? बस खत्म बात। तुम्हारा तुम्हारा मोटिव होना चाहिए। मैं दिन में उठा, सुबह उठा, मैं कॉन्टेस्ट देने बैठा, वैसे 4 क्वेश्चन में बना पाया, नहीं बना पाया। अगर नहीं बना पाया तो मैंने, मुझे क्या नहीं आता था मैंने वो पता कर लिया, नेक्स्ट वीक में उसको प्रैक्टिस करूंगा। बना लिया तो मैं सुकून से सो जाऊंगा वापस। आहा, दिस इज द लाइफ दैट यू हैव टू बी। जितना तुम रेटिंग के पीछे भागोगे, जितना वो भागोगे, उतना तुम्हें दर्द होना है, और कुछ नहीं है। ओके, अब स्पैम मत करो यार बैठ के। Can anyone survive in tech industry with poor communication skills? Yes, I have seen people surviving that way, and very few people communicate too much. In most skilled places, I think people compete more on people deliver more with skills rather than speaking. Only when you get too corporate, and when you get too when you get to a place where you can spend time speaking and doing too much of meetings, that's when you realize that okay, communication skills are important. But then in most places where they are building tech, when they are starting out, you don't have time to speak too much. You have to just communicate enough and just work on things. So communication skill isn't the blocker in most cases. Okay. कॉन्टेस्ट अनरेटेड होगा क्या? मुझे नहीं पता यार, आई डोंट कंट्रोल लीड कोड। आज ही तीसरा डीपी से किया, डीडी नहीं सूझा, ठीक है कोई नहीं, डीपी सोच लिया, अच्छा दैट्स अ गुड सॉल्यूशन। भैया मे बी गिव एडिटोरियल ऑफ एट कोड बिगिनर्स, देखते हैं, एबीसी वी कैन थिंक ऑफ, बट मैं खुद ही नहीं दे पा रहा हूँ यार, तो हाउ विल आई लाइक काइंड ऑफ टेक दैट अप? मे वी विल डिस्कस दोस थिंग्स, विल सी। आईसीपीसी के लिए प्रिपेयर के लिए प्रॉपर वीडियो बनाते हैं यार, थोड़ा टाइम होने दो, आईसीपीसी के लिए भी वीडियो क्रिएट करेंगे प्रॉपर्ली। विल डू प्रेप फॉर आईसीपीसी। अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ओएस के अराउंड थोड़ा कंटेंट क्रिएट करूंगा इस वीक, ताकि तुम लोग ओएस वगैरह के थोड़ा और प्रिपेयर हो जाओ। मुझे शेयर मत करो यार। आई somebody is saying that भैया I found telegram channel where they are sharing things, मुझे मत शेयर करो यार, मैं कुछ नहीं कर सकता। I understand that being someone you look up to, it does sometimes feel कि यार विवेक आप कुछ कर दो इसका, but being very honest, um, I'm as helpless as you, मतलब there is nothing I can do. Maybe I can make a post, I can bring it to notice, but कौन change करेगा उस चीज को, right? There is no police in this, right? There is no police that involved. इसलिए लोग बोलते हैं गवर्नमेंट क्यों होना जरूरी, गवर्नमेंट होना जरूरी इसलिए है ना कि there has to be some sort of law and order। यही है लॉ एंड ऑर्डर का कमी का प्रॉब्लम। शुड आई कन्फ्रंट द 6th guy in today's list? नहीं नहीं यार, छोड़ो यार, क्या सोचना है इनके बारे में। भैया सब ओए चीट करके निकालते हैं, जेन्युइनली देंगे तो नो चांस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग। यस, मैं सैडली सेइंग दिस, बट मैं भी तुम्हें रोकूंगा नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम चीटिंग करके करना चाहते हो तो कर लो, आई विल नॉट स्टॉप यू। एट दिस पॉइंट देयर इज नो अदर वे अराउंड। नहीं नहीं, ओए का लाइक मैं चीटिंग नहीं कराऊंगा भाई, डिस्कस करेंगे अपन प्रॉपर क्वेश्चंस। Cleared Google enter this. Big chunk of our audience are also part of these groups, right? So I don't judge people based on whether they cheat or not. I think over time I've realized that people do it for their own reasons. सबका अपना अपना अलग रीजन चल रहा है लाइफ में। I don't judge them based on that. सीखने आना है तो मेरे चैनल पे आ जाओ यार, that's it.
नहीं करना चीटिंग, थोड़ा एजेड का स्टूडेंट होने में प्राइड है। यस, अगर कर कंप्लीट, अगर उस लेवल पे पहुंच जाओगे 4 क्वेश्चन कंसिस्टेंटली बन रहा है तो फिर तुम्हें चीटिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, है ना। लोग करते भी अच्छा। Currently, I'm an expert, and does becoming CM is enough to getting referral for Google from you? I think CM is good enough, I feel, for Google. सर आप अपने कॉलेज में, मैंने अपने टाइम पे एक आध दोस्त की हेल्प की होगी, मेरे को जितना याद आ रहा है, मुझे याद जितना टाइम याद है, बट मुझे बहुत लोग पूछते थे, मैं करता नहीं था कोडिंग टेस्ट में। दिस इज लाइक 4 5 years बैक यार। हैंस नीमन भी तो चीट करता है। पर डिस्कशन का सेशन कब स्टार्ट होगा, वो करते हैं आईजीएम का। हाँ हाँ, डोमिनेटर आई नो हिम, मतलब आई हैव नॉट टॉक टू हिम मच, बट मतलब आई नो हिज प्रोफाइल एंड आई नो दैट ही इज डूइंग रियली वेल। हैप्पी टू हेल्प हिम एनी टाइम यार, ऐसे लोग हैं ना। वही तो बोल रहा हूँ, देखो उसको compete करते सोचते हैं कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, अपना कर रहा है यार, प्रैक्टिस चुपचाप ग्रो भी कर रहा है। आई हैव सीन जस्ट इंडस्ट्री। ओके सर, जैसे हमें किसी टॉपिक के पर्टिकुलर प्लेलिस्ट देखनी, एग्जांपल ट्री, मतलब जो यूट्यूबर लोग करते हैं वो, बट इन कॉन्टेस्ट क्वेश्चन थोड़े हार्ड आते हैं। यस, तो डीएसए, तुम लोग जो बोलते हो ना कि डीएसए सीपी में क्या डिफरेंस है, कॉन्टेस्ट सीपी होता है, तुम लोग पढ़ते डीएसए हो, तो डीएसए इज लाइक बेसिक थिंग्स विच इज कि ये होता है, ये होता है, ये ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, बट उसको अप्लाई करना इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली, क्या तुम उसे जेई क्रॉस क्रैक कर लोगे? वही डिफरेंस है कि तुम प्लेलिस्ट और डीएसए में पढ़ रहे हो और कॉन्टेस्ट देने में। जे एनसीईआरटी पढ़ के जेई एडवांस देने जाना और डीएसए का प्लेलिस्ट देख करके ये सब ओएस वगैरह देने जाने में वही फर्क है दोनों में। ठीक है, अगर मुझे कोई अगर मुझे एनालिसिस देना पड़े तो डू यू हैव अ प्लान आफ्टर रिटायरमेंट? भाई अभी मैं 25 26 साल का हूँ भाई, क्या रिटायरमेंट करने की बात कर रहे हो तुम? अभी तो मैं स्टार्ट ही किया हूँ बस। आई लिव इन फेजेस, मतलब अभी थोड़ा दिन तक आई वाज वर्किंग ऑन थिंग्स, फिर थोड़ा टाइम चिल, थोड़ा टाइम फेजेस, फिर वर्क। एनीथिंग प्लान्ड आफ्टर आईसीपीसी? यार अभी तो कुछ नहीं प्लान किया है, अभी आई विल वर्क ऑन बिल्डिंग समथिंग। आई फील there is आई एम मोस्टली वर्किंग विद कॉलेजेस राइट नाउ टू हेल्प देम बिल्ड बेटर थिंग्स, so that's what I'll focus on mostly. ऑनलाइन में यार आई डोंट वांट टू गेट इनटू टू मच थिंग्स। भैया कैंपस प्लेसमेंट की कौन सी कंपनी सिस्टम पूछती है? काफ़ी सारी पूछती है यार, बट बेसिक सिस्टम डिजाइन ही पूछती है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछती है। भैया कोर्स से रेटिंग इंप्रूव नहीं हो पा रही, स्टक एट दिस प्राइड मी। आई थिंक आईसीपीसी कैंप यू कैन स्टिल, खत्म नहीं हुआ स्ट्रीट उसकी, मतलब अब तो वो सेल्फ पेस्ड हो गया है सॉर्ट ऑफ, बट कर सकते हो उसको कंप्लीट अच्छे से। 800 प्लस तो बहुत आगे पहुंच जाओगे। वेयर डू यू वर्कआउट? यस, रिसेंटली नहीं, 2 3 महीने से करता हूँ, जिम ट्रेनर। यस, फ्लेक्स कर रहे हैं क्या? यस। तुम लोग भाई इसको भी चिल स्ट्रीम बना दोगे। चलो फिर आज के लिए डिस्कस कर लिए सब कुछ मोस्ट प्रॉब्ली, बट वही है यार, इफ आई हैव टू फाइनल वर्ड्स यार, क्योंकि मैंने नाम फ्रस्ट्रेटिंग दिया था यार, अभी रुक जाओ। फाइनल वर्ड्स यार, अगर चीटिंग लग रहा है कि करना पड़ रहा है ओएस वगैरह में, तो डोंट फील सैड अबाउट इट। ठीक है, डोंट ट्राई टू नॉट टू ग्रो बियॉन्ड इट, बट अगर नहीं कर पा रहे हो तो आई नॉट रेस्ट्रिक्ट यू ऑन दैट, बट अगेन अंडरस्टैंड दैट सिर्फ चीटिंग से लोग कहीं और नहीं जा पाते हैं। ठीक है, पीपल डोंट गो एनीवेयर बिकॉज ऑफ जस्ट चीटिंग। बस बस बस, आउटसाइड विंडो भाई, मेरे विंडो के बाहर दिखता नहीं है, सनलाइट नहीं आती मेरे रूम में, मेरे रूम में रिकॉर्डिंग स्टूडियो सेटअप है, तो सनलाइट नहीं आती मेरे रूम में। आई गो आउटसाइड। सजेस्टिंग फॉर फ्लिपकार्ट 6.0? यार मेरे पास कोई सजेशन नहीं है, पढ़ो बैठ के और देखो। गेस द चैट जीपीटी 4 रेटिंग। 1400 1300 maybe, I think it should be around, मतलब if I have to GPT, chat GPT will be 1100 1000 maybe, less than 1000 actually, 800 900 1000. GPT-4 would be 14 1300 14 1300 I feel.
चिल सेशन चल रहा है, वही कन्वर्ट हो गया है मेरे ख्याल से सौम्य जी। तो ये उसमें ग्राफ ऑन एजेड इज एनफ फॉर सीएम, यस इट्स एनफ। 3 महीने से 1100 पे अटका हूँ, 300 क्वेश्चन कर लिया, सोचा था पीपल पहुंच जाऊंगा, क्या करूँ, स्टिल कब आई रिसर्च ऑर्बिट वाइज। ओके, वही है इन्फ्लेटेड रेटिंग्स की प्रॉब्लम। डीपी वर्कशॉप करो यार, डीपी वर्कशॉप तो डाल ही रखा है पूरा पूरा, वो कंप्लीट कर लो। उसमें पुअर तो नहीं होगा डीपी में मेरे हिसाब से। हाँ, यू आर सेइंग बॉट्स आर बेटर देन मी विवेक, अरे नॉट रियली, बट आई फील सम टाइम दे माइट, दे माइट, मतलब आई सी इन 2 years टाइम। तो जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी रेटिंग बढ़ाओ। आई फियर कि यार बाकी सब अब जो फर्स्ट ईयर में आएंगे तो वो लोग कैसे करके क्या करेंगे भाई इसके बाद से। हम लोग तो फिर भी जो लोग निकल गए या जो अभी फोर्थ ईयर में है वो तो निकल जा रहे हैं। उसके बाद जब जब तुम्हारा एक सोल कंपटीटर होगा जीपीटी, मतलब एआई बेसिकली थोड़ा और इंटेलिजेंट वाला, तो कैसे ही compete करेंगे लोग, जिसने जो तुम्हारे हर हर चीज में तुम्हारा लाइक एक एटलीस्ट अंडर ग्रेजुएट लेवल तक का कर देगा चीजें। तो वेरी हार्ड फॉर ह्यूमंस टू compete, एटलीस्ट इन इंडिया आई फील। इस 1270 इज नॉट बैड फॉर अस, आई थिंक अभी हो जाएगा थोड़ा सा और डीपी ग्राफ थोड़ा ये सब पढ़ोगे तो पहुंच जाओगे। बाइनरी सर्च कंप्लीट कर लो, डीपी ग्राफ कंप्लीट कर, दिस शुड गेट यू टू द 1400 रेंज। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम जो निकल जाएगा वो बच जाएगा भाई, जल्दी जल्दी निकल के भागो, जॉब ले लो, भागो, पैसे कमाओ, चुपचाप भागो। मुझे तो लगता है आ, मुश्किल है भाई अगर ये आ गया। भैया नाउ अबाउट टू एंटर फोर्थ ईयर फेसिंग इश्यूज इन ओए, एजेड यार, एजेड इज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, एजेड प्रीमियम इज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। मुझे लोग आगे पूछते हैं विवेक मैं एजेड प्रीमियम ले लूं, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। लाइक प्लीज मेक श्योर दैट यू इन्वेस्ट बाय थिंकिंग कि तुम्हें 4 महीने लगेंगे उसे कंप्लीट करने में। उससे उसके उससे शॉर्ट में तुम्हें इफेक्ट दिखेगा, बट वो नहीं दिखेगा तुम सोच रहे हो। नॉट नेसेसरीली, कुछ कुछ एजेड के उसमें मतलब 80% would be mix of different platforms and 20% would be original, 30% would be original, I would say. Okay, what do you call a skill? भाई क्या क्वेश्चन, इतना नहीं डेफिनेशन आता मुझे। भैया कोड से पे हूँ, आई एम डूइंग कोड शेफ इज ओके, हाँ इट्स फाइन, यस। करते भाई, कुछ सॉल्व करते, प्रॉब्लम्स देखते हैं। चीटिंग वाले प्रॉब्लम पे मैं बैठ सकता हूँ, लेट्स सी इफ आई गेट टाइम आई विल सिट ऑन दिस प्रॉब्लम एंड लेट्स थिंक अबाउट हाउ वी कैन डू इट। द ओनली बेनिफिट आई हैव इज दैट आई हैव algos in it, so I can build a team and I can work on certain problem statement I love to work on. That's the best benefit I have in my resort. तो अगर मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा की चीटिंग को अब सॉल्व करना ही है, तो हो सकता है मैं 2 साल के लिए एक नई कंपनी बनाने बैठ जाऊंगा जिसमें हम सिर्फ चीटिंग को सॉल्व करेंगे बैठ के, दिमाग खराब। ठीक है, प्रॉक्टरिंग, बस प्रॉक्टरिंग सॉल्यूशंस एसेंशियली, है ना। चाहे उसके मुझे सीसीटीवी कैमरा में लाइक इमेज प्रोसेसिंग लगा के डिटेक्शन लगाना पड़े, मोबाइल डिटेक्शन, या फिर मुझे लैपटॉप पे ओएस पूरा चेंज करना पड़े कंपनीज का जिस पे टेस्ट हो सकता है, सब कुछ मैं कर सकता हूँ एसेंशियली, बट भैया मेरा फोर्थ स्टेयर स्टार्ट हो रहा है ऑन नाइट हूँ, फोकस क्या करूँ, सीपी करो थोड़ा बहुत, कॉन्टेस्ट के लास्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, लीड कोड हार्ट के। लोनलीनेस हो रहा है, लोनलीनेस तो यार इस दुनिया में सबको हो रहा है मेरे हिसाब से, कितने लोग कोई ऐसा है जिसको लोनलीनेस नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से मोस्ट कॉलेजेस में लोग लोनली फील करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, बोथ इन द टर्म्स ऑफ की ग्रोथ, कुछ ग्रोथ के लिए कोई दोस्त नहीं रहता। द ओनली बेनिफिट ऑफ आईआईटी इज दैट यू हैव फ्रेंड्स हु ग्रो विद यू, नॉट जस्ट चिल विद यू, ऐसा है, बहुत लोग को होता है। और आज भी लाइक होता था, जीएफ बना ली, हाँ घूम फिर के तुम उधर ही आ जाओ, सब सब सब। स्पेशलिस्ट तो एक्सपर्ट प्लीज गाइड, स्पेशलिस्ट तो एक्सपर्ट यार, आई थिंक डीपी ग्राफ वुड बी द नेक्स्ट थिंग टू गेट इनटू। ब्रेकअप हो गया भाई, तुम लोग भाई अभी मत करो। स्पेशलिस्ट से एक्सपर्ट बता दिया यार, मैथ फोर्सेस के लिए प्रैक्टिस कहाँ से करें, मैथ फोर्सेस आई थिंक वुड बी, ऐसे जेई का कॉम्बिनेट्रिक्स वुड बी अ वेरी हेल्पफुल थिंग टू डू, फोकस ऑन दैट। रिलेशनशिप पे चिल स्ट्रीम
मैंने सोचा था, बट फिर मुझे किसी ने एडवाइस करा नहीं करते रिलेशनशिप विद स्ट्रिंग, ये दिस वुड बी सो मच ऑफ एंटी या अजीब टाइप का, सब मोह माया हो जाएगा। बट ठीक है, अभी तुम लोग अभी स्टूडेंट हो भाई, पढ़ाई करो, कभी अपन मिलेंगे तो ऐसे बातें करेंगे इन सब चीज़ों पर, ठीक है? दिस आर ऑफलाइन टॉक्स। ओके, लीड कोड हार्ड्स वो निकालते हैं, हाँ यस यस निकल जाता है। Chalo then, this will be all for today. Let's meet again in the next one, but we'll have weeks discussions around this always. IIT placement trend prediction this year, especially KGP. सही रहेगा यार, आई थिंक प्लेसमेंट विल बी देयर, बट चीटिंग आई एम नॉट श्योर अबाउट हाउ दैट बी कंट्रोल्ड। इसने एडवाइस किया, बहुत गलत एडवाइस है। देखते हैं, सब पीपल तो स्पेशलिस्ट गाइड, स्पेशलिस्ट तो यार डिफ टू सी लगाना बैठा हुआ है बस चुपचाप। हाँ डिसीजन चला गया, बट चीटिंग आ गया अब। चलो जी, लेट्स रैप इट अप फॉर नाउ, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन। बट देन आई कभी कभी रोना आता है ब्रो, फ्रेंडशिप विद क्लास में। टाइम मैनेज करना सीखो यार, like I understand what you're saying, but time manage karna seekho. You have to find people, you have to get into communities where people are active in that sense. Decision कब जाएगा? Decision ज़्यादा है भी नहीं, but I think if you want to be, do you want, तो बताओ कौन सा करना है, अच्छा सुनना है या फिर, मतलब मेरे दोनों व्यूज है, एक तो है कि थोड़ा कम ही हो गया है, बट इफ यू आस्क मी ट्रूली, मुझे नहीं लगता कि देर इज एनी करेक्शन गोइंग टू हैपन टू मच, और देर इज गोइंग टू बी अ बिग बूम वेरी सून, ठीक है? ट्रुथ, देर इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग बूम ऑफ टेक हायरिंग इमीडिएटली कभी, ठीक है? तो जैसा चल रहा है ऐसे ही चलेगा आराम से। हायरिंग हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है, तुम्हें दिख रहा होगा रिजल्ट वगैरह इधर उधर, बट देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ बूम ऑफ हायरिंग अचानक से कि भाई वापस पूरा एकदम पहले ऐसा हो गया, एकदम सब हायर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। In a particular playlist, maybe we can do. We need COVID 3.0. नहीं, now people have learned, now investors have learned, so they'll not invest money on this. यार आराम से यार बिजनेस करो भाई, ऐसे घर के नॉर्मल स्टोर बिजनेसेस करो, मैं बता रहा हूँ जिंदगी खुशहाल रहेगी। मैं आफ्टर वर्किंग सो मच हियर एंड देयर, आई रियलाइज कि यार एक घर के बगल में नॉर्मल सा जो फैमिली और दुकान चला रहा है, वो भाई वो कितना खुश रहता है जिंदगी में। इधर हम लोग देखो कितना पढ़ाई लिखाई करके ये सोचना पड़ रहा है, वो सोचना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, ये दिमाग खराब। आई वांट, मेरे एक जूनियर, मेरा एक स्टूडेंट था, ही वाज टॉकिंग टू मी, सो ही टोल्ड ही हैज अ, लाइक उसका एक मिठाई की दुकान है, एंड लाइक ही हैज अ फैमिली बिजनेस देयर, प्लस कुछ कुछ और भी सोच रहा है वो उधर, तो ये करे या फिर टेक के लिए प्रिपेयर करे, है ना? तो आई वाज लाइक भाई क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? आराम से बैठो भाई, जब सब सेट बना बनाया है, क्यों इतना टेंशन लेना है ना? फाइंड अदर वेज टू मेक योरसेल्फ फुलफिलिंग, कि यार मेरे व्हाट मेक्स मी फुलफिलिंग इन माय लाइफ, फाइंड अदर वेज। बहुत ज्ञान हो गया आज के लिए, इससे ज़्यादा तुम लोग लोगे तो फिर कहीं और चले जाओगे। आई विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट मीट, तब तक के लिए सी ऑल, बाय बाय, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन, यस 400 पार हो गया था, 400 के तो हर क्वेश्चन पे 300 सबमिशन, सही बात है। चलो जी, बाय बाय, हैव अ गुड डे अहेड, 7 o'clock.